Hello, students. Today we are going to do two questions. One is very small. Okay. Usually, whenever we perform, and by the way, another question is good question from electrostatics. And I will give you the formula in the beginning itself. If you don't want to watch the complete video, you can just see the formula and get over with. Okay. But I will derive and do it properly, the way it should be done. And I really encourage you to watch the whole method. Okay, let's start. All right. So let's start with the first question, which is very easy, but it can create confusion. Okay, that's why I'm considering that question actually. So let's, okay, fine. So as you can see, this is very usual question. A very easy question, to be honest. So, for example, x is equal to, it is given a minus b. Now you have to calculate, you have to read the question. I'll show you the question. The maximum percentage error in the measurement of, in just n is there, in the measurement of x will be. So, question you have to read carefully. You have to read maximum percentage error. Okay, not maximum error, maximum percentage error. But किसके measurement पे? In the measurement of x. What are you measuring? X, right? So tell me one thing. What is the maximum error? Forget about percentage error for a while. What would be maximum error? Sorry, maximum error in the measurement of x. All right. It will be, your common sense also says, what you'll to measure x measure करने के लिए, firstly you'll measure a, then you'll measure b. So there would be some error in the measurement of a, ठीक है, delta a plus minus, and there would be some error in the measurement of b, delta b. Okay. Now what would be total maximum error? Maximum error. So delta x max in the measurement of x. Would it not be this delta A plus delta B, right? Plus minus you can take common, right? Therefore, don't be confused ki which one you will take plus or minus. You have to calculate maximum. So basically you have to add those error, and since they are individually plus minus, they can be either positive or negative. Plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है error, right? सो प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, मैं क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए इज 2, but you measured 1.9. What is the error? Delta A minus 0.1, right? And if you measure 2.1, what would be the error? Plus point. Okay. So that's how plus minus you are considering. ऐसे ही consider कर रहे हैं. ठीक है. Now, to calculate maximum percentage error, what will you do? Delta x max upon x, and what is x? Upon A minus B. Percentage error into 100, you have to do both sides, right? Now, just to, I mean, just remove minus sign, you can take mod, right? That's what mod represents. It can be minus as well as plus into 100 is equal to mod of del A by A minus B, right? Plus mod of del B upon A minus B, right? And which option is correct? By the way, into 100. So total may you'll multiply by 100, right? I'm not going to use next page. So I hope you understood the question. Okay. So this is how you have to do. You have to use your basic mathematics and then calculate maximum error in each and individual. By the way, for multiples also you'll add them. There are rules. If it is division, I mean, if you have to calculate maximum, then you have to add all those errors, right? It and power should be multiplied. It doesn't matter if it is in division, it would be added because you're trying to calculate the maximum error. Okay. So, or if there is any other rule, please check. I'm telling only in this context of this question.
Okay, let's move on to the next question. Okay, so next question is from electrostatics. Okay, by the way, you can comment under the video what this animated video represents. These points are going inside. It seems like some sort of line, field lines. It could be electric field lines or magnetic field lines. You can tell by the way. Okay, fine. So let's move on to the question. What the usual question, a famous question, है? It's just okay. By the way, whosoever doesn't have time, you can see watch. I'm going to read the question for you, and then I'll give you the formula. Okay. Figure shows a rod AB. AB rod है यहाँ पे कहाँ पे ये वाला from here to here. AB एक रॉड है बेंट है एक कर्वेचर के फॉर्म में ठीक है 120 डिग्री में आर्क एंगल कितना है 120 डिग्री दैट्स व्हाट दिस लाइन मींस अ चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रॉड AB AB पे कैसा चार्ज है माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजुअली यू आर टॉट टू डिराइव दीज एक्सप्रेशंस आपको डेरिवेशन समझाया जाता है बट जस्ट इन केस इफ यू फॉरगॉट इन द एग्जाम फॉर्मूला भूल भूल गए तो इट्स वेरी इजी टू डिराइव ठीक है दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू इट इन द लॉन्ग वे ऑल्सो तो जिसके पास टाइम नहीं है प्लीज मैं आपका भी भला चाहता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ हो जाएगा 2 k lambda by r r is the radius of course into sine alpha by 2 ओके अल्फा इज व्हाट कंप्लीट टोटल आर्क एंगल ठीक है यहाँ पे वो 120 हो जाएगा एंड के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी आर इज द रेडियस I'm sorry r is the radius of curvature okay so you can calculate it directly and get it over with but I'm going to derive it anyway okay even if you do not watch at least few of you I'm hoping will watch okay fine let's move on to the next page and then derive okay I will derive only for this in the context of this question only. So let's say you have this arc. Okay. Now this is where you have to calculate the. This is your rod AB and इसका center पे कुछ angle है alpha theta whatever. Now what you do you will take a strip यहाँ पे कितने पे थीटा पे you will take a strip of d theta width यहाँ पे ठीक है कितने का dl अगर AB का लेंथ L है you have taken a differential length element ठीक है टेल मी वन थिंग यहाँ पे एक अलग से ऐसे पिक्चर एक रफ यू कैन मेक मेरे ओके लेट मी बी आल्सो देयर so that you understand you see the expression I all come on what happened did I erase it all okay fine I'll quickly just make here यहाँ पे थीटा पे जाके मैंने डी थीटा का स्ट्रिप डीएल लेंथ लिया था ए है बी है ठीक है I'm sorry I should have eraser also right eraser okay 10 okay see now what I'm trying to tell you this will act as a point charge और उस point charge की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा और O पे what would be electric field let me tell you one thing नेगेटिव चार्ज है ना इस पे माइनस क्यू है ना ठीक है ओके सो डीएल की वजह से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
इन विच डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होगा, इन विच डायरेक्शन इट विल फॉल। सी दिस इज माइनस क्यू, माइनस डी क्यू चार्ज, माइनस डी क्यू चार्ज। ओके, नाउ डायरेक्शन निकालने के लिए व्हाट यू डू, एक छोटा सा पॉजिटिव डिस्चार्ज लाते हो एंड देखते हो कि उस पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लग रहा है। तो माइनस डी क्यू विल अट्रैक्ट, तो इसका डायरेक्शन किधर आ गया, डीई, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डीई आ गया। इसको हटा दो थोड़ा सा, डोंट बी कंफ्यूज। टेल मी वन थिंग, नाउ दिस डीई will have two components. One is going to be d cos theta, other is going to be d sin theta. Tell me one thing, similarly एक स्टेप इस साइड में भी आएगा, राइट, डीएल वाला, जस्ट टू चेक इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और तो नहीं है, यहाँ पे चेक करोगे तो अभी भी अवे फ्रॉम द सेंटर ही आएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, राइट। यहाँ पे डी आएगा, सेम एलिमेंट लिए हो, तो इसका कंपोनेंट किधर आएगा, थीटा पे ही लिए हो, सेम सिमेट्रिक एंगल ले रहे हैं, इधर कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा, और इसके इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। डोंट यू थिंक दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, दे विल, राइट। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, टू डी कॉस थीटा। बाय द वे, इफ यू आर कंसिडरिंग टू डी कॉस थीटा, इसका मतलब है कि जो आर्क का दूसरा हाफ है, आर्क का जो सेकंड हाफ है, यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इट। सो थीटा विल वैरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, if you'll consider this as a baseline, theta will vary from 0 to your half of the total angle. टोटल कितना था 120, तो 0 से 60 तक ही जाएगा, 60 यानी पाई/3, राइट। सो 2d cos थीटा, फाइन। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हुआ हमें, तो हाउ विल यू डू, 2d cos थीटा एंड थीटा विल वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू पाई/3, इजंट इट। जस्ट उसके बाद सिंपल डेरिवेशन है, 0 से पाई/3 टू डी क्या हो जाएगा, टेल मी, डी हो जाएगा के, आई एम कंसिडरिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, इंटू कॉस थीटा। नाउ लेट्स कैलकुलेट डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल, डीएल लेंथ है इसका स्ट्रिप का जो छोटा सा माने हैं हम लोग, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यू कैन कैलकुलेट लैम्डा, राइट। लैम्डा वुड बी व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, एंड लेंथ ऑफ ए बी, सी दिस इज द होल आर्क, राइट, और इसका रेडियस आर गिवन है। लेंथ ऑफ ए बी वुड बी हाउ मच, टेल मी, ए बी इंटू थीटा, सॉरी, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा विल बी टोटल एंगल बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ए बी टोटल आर्क लेंथ। तो 2 पाई/3, 120 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 पाई/3, राइट, इंटू डीएल। नाउ व्हाट वुड बी डीएल, अगेन व्हाट वुड बी डीएल, ये निकालना हुआ तो क्या कैसे निकालोगे, आर इंटू डी थीटा, तो मैं यहीं पे सीधा लिख दे रहा हूँ आर इंटू डी थीटा। अब बस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दो। देखो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस derivation, it's very easy when you will get into the habit of doing it, okay। I didn't erase actually, I move on to the next page, तो मुझे लगा इरेज हो गया, फाइन। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जब जा रहा हूँ मैं, तो व्हाट विल आई डू, ये डी क्यू की वैल्यू पुट करूंगा, आप वीडियो पीछे करके देख लेना, और दैट्स इट। उसके बाद आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। 2k dq/r² cos थीटा, यहाँ से लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 से, फिर से चेंज हो गया क्या, नहीं, 0 से पाई/3, 60 है, राइट, 2k dq/r², 2k/r² लिखते हैं, उसके बाद डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं। डी क्यू की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू, बाय द वे दिस आर विल बी कैंसिल्ड आउट, राइट, ये आर कैंसिल,
Q upon 2 pi by 3 into theta. Q upon 2 pi by 3 into d theta, right? Into cos theta. एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, ये दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3k अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, अंदर क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 3 कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो सबको आना चाहिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे मेंस वाले, तो आई डोंट हैव टू से। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, राइट, 0 से पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी 0 बिकॉज साइन 0 0, सो 3k अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन पाई बाई 3, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो वैल्यू रख देते हैं 3/4 पाई, एक पाई पहले से पाई स्क्वायर कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू √3/2। यहाँ पे तो क्यू रहेगा ही रहेगा, तो पाई स्क्वायर, 2 4 जा 8, 3√3 क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज दिस द आंसर, 3√3 क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर? फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। देख लेना इफ आई एम मिसिंग की विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो पाई स्क्वायर है 8 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 3√3 क्यू। नाउ आई डायरेक्शन मैंने अभी दिखाया था ना, डी की डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन किधर जा रही है, 2D cos थीटा किधर आ रहा था, प्लस आई डायरेक्शन में, राइट, आई कैन। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो जितना शेयर कर पाओ, ठीक है, इट वुड हेल्प मी। एंड यस, एंड यू कीप आस्किंग द क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ने पूछा है, and that's why I'm telling. And let me know if you understood the question. Thank you.